Hello everyone. I think you all are well and have done well in the Commerce Matrix Olympiad. I'm just here to give you the solution of part A of the Commerce Matrix Olympiad, that is General Commerce Aptitude. Let's start. First question for the same is, why are informal sources of credit harmful to borrowers? Different options are: they are approved by government, they require strict documentation, they often charge a high rate of interest, and they offer loans only through banks. So in this case, we are talking about the why are informal sources of credit harmful? So the right option is C, as they often charge a very high rate of interest. So for question number 1, right option is C. Second question, which of the following statement about unorganized sector is correct? Here focus is on the word correct. Jobs are secured and have fixed working hours. Workers get paid leaves and health benefits. There is no job security or fixed income. All workers are registered under government schemes. So here the focus is on the word unorganized sector. So the right option is C, that is there is no job security or fixed income. So in case of question number 2, the right option is C. Question number 3. What role does the World Trade Organization play? The focus is that what role does World Trade Organization play in the global economy? It provides loan to developing countries. It regulate and promote free trade between countries. It controls the flow of foreign exchange. It helps in setting up multinational corporations. So the right option is B. The main role of World Trade Organization, it is regulate and promote free trade between countries. So B is the right option for question number 3. Let's proceed to the next question, question number 4. Which of the following is not, the focus is on the word not, a method through which multinational corporations expand production across the globe? First is setting up partnership with local companies, buying local companies, investing only in home country technologies, directly setting up factories in other countries. So the right option is C, investing only in home country technologies. So for question number 4, the right option is C. Let's move to the next question. Question number 5. Yes. In which of the following situation can a consumer file a complaint against COPRA, Consumer Protection Act? When a person can file a complaint, focus is on the word complaint. When goods are bought for resale, when goods are used for earning profit, when a consumer receives a defective mobile phone bought for personal use, when a consumer borrows a phone from a friend. So here the situation, we have to focus on the situation when a consumer can file a complaint. So the related to situation, that is when a consumer receives a defective, when a person receives a defective mobile phone, only then he will file a complaint. So the right option is C. In case of question number 5, right option is C. Come to the next question, that is 6. Let's start with the question number 6. It is a sequence-based question in which different sentences are given and we have to find out the correct sequence. So let's start. First one is, the borrower is unable to repay the loan on time. The borrower takes another loan to repay the first one. The borrower borrows money from a moneylender at a very high interest rate. The moneylender demands extra interest or property as collateral.
So let's go through the sequence. First one is the borrower borrows money from a money lender at a very high interest rate. So this is the first sentence. After that, the borrower is unable to pay the loan on time. Then is the one, when he is not able to pay the loan on time, the money lender demands extra interest when he is not able to pay or property as a collateral. 4. Then the borrower take another loan to repay the first one. This is the procedure how he gets into a debt trap. 3142. 3142. So right option is A. So in case of question number 6, the right option is A. Question number 7. Okay. Match the column 1 with column number 2. Let's go through the different options in column 1. Public sector, private sector, organized sector, unorganized sector. And the different options in column 2 are irregular jobs and uncertain pay, formal employment with job benefits, operated by government for welfare, driven by profit motive. Let's match it. Okay, public sector. As we know that public sector, it is operated by the government for welfare. P goes with option 3. Private sector, it's driven by profit motive. Let's go with 4. Organized sector, it is formal agreement with job benefits. It goes with 2. S is organized sector, it means the irregular jobs and uncertain pay. This is 1. So right option is 4, 3, 4, 2, 1. Let's see, that is C. So we can say in case question number 7, the right option is C. Next, let's move forward to the next question. That is question number 8. The question number 8 is similar. Again, the match column 1 with the column 2. So let's read the column 1. Right to safety. Different rights are mentioned. First is right to safety, right to choose, right to be informed, right to seek redressal. And the column 2 is freedom to select from a variety of products, assurance from hazardous goods and services, access to details like MRP, expiry date, contents, file complaints and get compensation for loss. Let's match the options P, Q, R, S. So in case of P, right to safety, that is assurance from hazardous goods and services. That is 2. Right to choose means we get freedom from a variety to select the product. That is 1. Our right to be informed, that is we can access to the details like manufacture, expiry date and contents. That is 3. Right to seek redressal, that is we can file a complaint and we can get the compensation in case of a loss. 4. So right option is 2, 1, 3, 4. Let's see, it's option D. So in case of question number 8, right option is D. Let's move to the next question. Question number 9. Yes. Now let's move to the question number 9. Question number 9, it is a statement-based questions in which we are having the 2 statements. Both can be true, both can be false, and one can be true and one can be false. Let's see. Statement 1. Globalization always benefits small Indian producers. No, it's not always. So we can say it's false. Second statement, globalization can create both opportunities and challenges for producers in India. Very well, right. Globalization, it can create opportunities as well as challenges. So it's true. We can say first statement is false and the second is true. So option is C, in which statement 1 is false and the second is true. So in case of question number 9, the right option is C. Let's move to the question number 10. Yes, this is again statement-based question in which 2 statements are given. Statement 1, credit can help people meet their needs and improve their standard of living. It's very well right that credit, it helps the people. We can meet our needs and also helps to improve our standard of living. It's true.
credit always leads to a debt trap. No, it's not right. Credit always leads to a debt trap and financial crisis for the borrowers. It's not right. So this option is false. So we can say statement 1 is true and statement 1 is true and 2 is false. So right option here is statement 1 is true and statement second is false. So in case of 10th question, statement B is right option. Thank you everyone. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इसी आईडी पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to discuss the solutions of logical reasoning section of your Matrix Olympiad exam that is held on 5th of October. So let's start this session. So the first question that comes on the screen is, so in this question it is being asked that action is related to reaction in somewhat way. If there is a kind of action, there will be also the reaction. So we have to tell in the same way as stimulus is related to what. अगर action related है reaction से, then we have to find कि stimulus किससे related होगा। Reception नहीं होगा, vision is also not the opposite in the same way, same analogy follow नहीं होती है यहाँ पर, जैसे action और reaction की होती है। So the feedback is also the wrong answer. So the correct answer that will be here will be the response. So option number C will be your correct answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर यू हैव टू फाइंड आउट 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर इन विच 3 आर अलाइक। 3 कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से सेम है, बट इनमें से एक ऑप्शन जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स का, जो क्या है कॉमन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सो इसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखिए CFIL दिया हुआ है। अगर मैं C की बात करूं तो आपको क्या नंबर मिलता है 3। F की बात करूं तो 6, I 9 एंड L गोज फॉर 12। तो आप एक बात देखेंगे स्टूडेंट्स कि 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है सर। और 6 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 3 का डिफरेंस है सर। 9 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 3 का डिफरेंस है। सो हियर वी आर हैविंग द कॉमन पैटर्न ऑफ +3 +3 +3। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ आई डू टॉक अबाउट द नेक्स्ट group of letters GHIJ. G goes for 7, H goes for 8, I goes for 9 and J goes for 10. If I can see here properly, आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 और 8 के बीच में क्या है, +1 है। 8 और 9 के बीच में भी सेम +1 है। 9 और 10 के बीच में भी सेम +1 है। ए पार्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था, +3 +3 +3, और उसी तरीके से बी पार्ट में भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, +1 +1 एंड +1। अब बढ़ते हैं थर्ड के अंदर। अगर मैं थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, देखिए थर्ड MOQS के अंदर M गोज फॉर 13, O गोज फॉर 15 एंड Q गोज फॉर 17 एंड S गोज फॉर 19। तो आपने देखा कि M कौन से नंबर पर है, 13th नंबर पर है, उसके बाद O आता है, मतलब M के बाद में लगभग 2 लेटर छोड़कर आपका क्या है, 15 है, +2 का पोर्शन है, फिर उसके बाद में +2 का डिफरेंस है, उसके बाद में +2 का डिफरेंस है। तो आपने देखा ए ऑप्शन के अंदर +3 +3 का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था।
बी ऑप्शन में +1 +1 +1 चल रहा था, मतलब जो नंबर्स जो बढ़ रहे हैं वो कॉमन है, सेम है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन के अंदर भी आपने देखा कि जो पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपने देखा वो भी क्या है, +2 +2 +2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, डी ऑप्शन बचता है। आंसर जो आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बट कैसे रहेगा इसको हम देख लेते हैं। एक बार देखिएगा आप स्क्रीन के ऊपर, P goes for 16, S goes for 19, U goes for 21 and X goes for 24। तो आप एक बात देखिए, यहां पे 16 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ 3। 19 and 21 there is a difference of 2। here we can see easily कि जो पैटर्न है वो सेम फॉलो नहीं हो रहा है। +3 के बाद +3 नहीं आया और 21 के बाद में +3 है, तो 3 2 3 का जो पैटर्न है वो यहां पे फॉलो होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, a set of letters which doesn't follow the same way, certain way, and is quite different from the other 3 options is P S U X। so the option correct will be the D option। so बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। so here we have the next same kind of question where 3 numbers are alike in somewhat way and we have to find the different number। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप सभी के लिए, जैसे कि 126। आपको कुछ नहीं करना है, you just have to find out one thing that which is the different number here। तो आप एक बात देखेंगे गाइस कि जो 126 है, if I do divide it by 7, it will be completely divided by 7। 126 can be divided by 7, 189 can be divided by 7, 217 can be divided by 7, but this is the only number that cannot be divided by 7। for एक बार हम करके देख लेते हैं, जैसे कि 126 आपके सामने है, it will go on 18। if I do speak about 189, it will go on 27। if I do speak about 217, it will also go on 31। so all these numbers are divided by 7, but this is the only numbers, option number C 254, that cannot be divided by 7। तो और सारे नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होते हैं, बट जो सी ऑप्शन है वो नहीं होता है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा 254। बढ़ते हैं आगे। लोयर, सेम जो आप फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके अंदर पूछा गया है कि लॉयर जो है वो कहीं ना कहीं एक लिंक रखता है किसके साथ, जस्टिस के साथ। लॉयर क्या लाता है, जस्टिस लाता है। वैसे ही जो आर्बिट्रेटर है उसका क्या काम होता है, जजमेंट सुनाना, बिल्कुल नहीं। इनजस्टिस करना, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन करना, बात करना, बिल्कुल नहीं। तो आर्बिट्रेटर आपका रिलेटेड होता है गाइस किससे, सेटलमेंट से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन हियर। So again we do have some pairs of letters। so CEGI is related to AGEK। इसको हम देखते हैं। CEGI is related to AGEK। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि DFHJ किससे रिलेटेड होगा। तो एक बार हम देखते हैं। आप क्या देखेंगे, C और A के बीच में एक रिवर्स ऑर्डर है, क्या है, -2। क्या है, -2। E और G में क्या है, E आता है आपका 5 के ऊपर और G आता है आपका किसके ऊपर, 7 के ऊपर। यहां पे आपने देखा सर क्या है, +2 है। G आता है 7 पर, E आता है 5 के ऊपर। यहां पे आपने फिर से देखा -2, फिर I आता है 9 पर, K आता है 11 पर, तो यहां पे फिर से क्या है, +2 है। आई होप इज इट वेरी मच क्लियर टू यू। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आपके लिए क्या हो गया, आसान। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D को +2 हमें फाइंड आउट, -2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले कि D के -2 अगर हम करेंगे लेटर्स के अंदर तो क्या ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आपको देखिए B आएगा। क्या आएगा, B। अब ऑप्शन में आप सबसे पहले ही देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाता है, C ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, BHFL और BDJK। तो बस आप सेकंड लेटर को फाइंड आउट कर लीजिए। F के बाद आप क्या करोगे, +2 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, +2। अगर मैं F को +2 करता हूं जो F6 के ऊपर है, तो मुझे नंबर 8 के ऊपर जो लेटर उसको फाइंड आउट करना है और वो क्या होगा आपका, H होगा। क्या होगा, H। तो BH का जो भी ग्रुप आपको मिलेगा आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा इसके अंदर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। आई होप इज इट वेरी मच क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी आपने देखा कि आपके जो लॉजिकल रीजनिंग का जो एग्जाम है इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के साथ में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी है। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, इस पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया गया है, हाउ वर्ड होते क्या है और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पूरे पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। तो आपने जब पैसेज पढ़ा होगा देन यू हैव realized one thing that it is not about the history of the humankind. history of humankind का डिस्कशन इस पैसेज में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी तरह की मिस्ट्री की बात की गई थी क्या, ह्यूमन कॉग्निशन की डेवलपमेंट कैसे हुई है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है, ह्यूमंस कैसे आए हैं, उनकी विजडम के बारे में बात की गई है, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट अबाउट दैट पोर्शन। ठीक है, एक डिस्ट्रैक्टर की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, करेक्ट आंसर हमको जो मेजर जो थीम है, सेंट्रल थीम है, उसकी तरफ हमें नहीं लेके जाता है। आप शायद इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे जब इसने एक वर्ड को यूज किया, टेपेस्ट्री वर्ड को इसने क्या किया था, यूज किया था। जैसे कि अगर आपने देखा होगा यहां पर देखिए, यहां पर जब हम ये देखिए टेपेस्ट्री, इंट्रिकेट टेपेस्ट्री दैट कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि कहीं ना कहीं सर स्टोरी लाइट टेलिंग की यहां पे बात की गई है, पर कहीं ना कहीं ये सेंट्रल थीम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सेंट्रल थीम है। कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन किया गया स्टोरी टेलिंग का, बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द इंपैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान के जीवन के ऊपर शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर आप प्रॉपर्ली क्या करते हैं, प्रीमाइसिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अजम्पशंस देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं, प्रॉपर्ली पूरे पैराग्राफ को एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ एनालाइज करके जब क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, जिसके अंदर पूछा गया है आपसे कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज, वर्ड का क्या मतलब है, जो शब्द है वो क्या है। अब आप इधर पैराग्राफ के ऊपर देखिए, इधर एक बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए वर्ड अ सिंबॉलिक एंटिटी, एक शब्द एक सिंबॉलिक एंटिटी है, formed from the ethereal, exist neither as animate nor as inanimate। ना ही वो एनिमेटेड है ना ही वो इनएनिमेटेड है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे कि दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। फिर इसने कहा सिंबॉलिक एंटिटी है, अगर ये सिंबॉलिक एंटिटी है तो ये एक टेंजिबल एंटिटी भी नहीं हो सकता। तो एक बहुत ही आसान ऑप्शन आपके पास में था, क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अ सिंबॉलिक एंटिटी फॉर्म्ड फ्रॉम द एथेरियल एग्जिस्ट एज नाइदर इनएनिमेट नोर इनएनिमेट येट पल्सेट्स विद द लाइफ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्या कहता है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू इफेक्ट इमोशंस। जो कहीं ना कहीं शब्द जो है वो आपके इमोशंस को कैसे उसके ऊपर एक प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर वन, वर्ड्स ओनली इवोक पॉजिटिव इमोशंस, क्या शब्द सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस डालते हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करके करते हैं तो एक बहुत ही करेक्ट आंसर की तरफ आप बढ़ पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी से पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्स हैव नो इंपैक्ट ऑन इमोशन। ये तो बात ही बिल्कुल गलत हो गई है, कंप्लीट डिस्ट्रैक्टर की तरह इसको यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्स कैन बी डिवॉइड ऑफ इमोशंस। अगर आप मुझे एक बात बताइए, सेम पैराग्राफ के पैसेज में आप देखिए, इट कैन इमिनेट warmth or coldness, it can be the positive or negative emotion, it can absorb emotions as well as stand as dry as a rock। ये जो लाइन है, इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको एक क्लियर कट आंसर मिल चुका होगा कि जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट वर्ड्स कैन absorb emotions and can become emotion themselves। so ऑप्शन नंबर बी will be the correct one। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 9th को डिस्कस करूं। एन एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, enchanting and sometimes daunting encounter with the world, which of the following conclusions can be drawn from the above statement। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में एक बहुत ही प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ आपको बढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर आप, मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, जब आप प्रॉपर्ली एक आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट को करते हैं, प्रॉपर्ली आप स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग जैसे कंसेप्ट को करते हैं, इन्फ्रेंस को पढ़ते हैं, वैसे कंक्लूजन को फाइंड आउट करना भी बहुत ही क्या रहता है आपके लिए जरूरी रहता है। तो जैसे कि इसने पूछा है कि स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं
ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं डिस्कस करूं तो आपने देखा इसने क्या बोला कि वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट अदर्स। क्या शब्दों दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आप एलिमिनेट कर दीजिए। द पावर ऑफ वर्ड शुड बी यूज्ड केयरफुली, यूज करनी चाहिए, बट हमने क्या देखना, देखिए जो आपको लाइन दी गई है इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है कि इसमें से आप क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। नेक्स्ट है वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर ये सारी चीजें डिस्कस तो की जा रही है, बट ये जो मुझे एक प्रॉपर जो सेंट्रल थीम जो है, जो मुझसे पूछा गया है कंक्लूजन, उसकी तरफ मुझे नहीं लेके जाते। तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ड्स कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स डिफरेंट कलर्स। कई तरह के कलर्स के अंदर ये क्या करता है, शब्द अपने आप को रंग लेता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट वर्ड्स डू पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल ऑफ इट्स डिफरेंट कलर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ड्राई एज अ रॉक, जो भी आपने इसके अंदर देखिए पढ़ा होगा। एनचेंटिंग, ये लाइन आप देखिए यहाँ पे, एन एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, एनचेंटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड। फ्रॉम दिस here you can conclude the option number D. So option number D will be the correct one. So आगे बढ़ते हैं, the last question of logical reasoning section. देखिए क्या कहता है, in the context of the passage what is the significance of world within the word। पूरी दुनिया एक शब्द में सम्माहित है सॉरी, जिसके अंदर आपने कहा कि शब्द का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस पैसेज के अंदर बताया गया है कि शब्द एक जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, शब्द कैसे सुकून देता है और शब्द ही कैसे दर्द पहुंचा देता है। जैसे कि आपने देखा, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, कहीं ना कहीं सही होता आपको दिखाई देगा। फिर भी हम और भी ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट सिग्निफाइज द ऑथर्स लव फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। यहां पर आपको समझ आएगी सर ग्लोबल कम्युनिटी की बात कहां की गई है, यूनिवर्सल तो है बट ग्लोबल कम्युनिटी की डिस्कशन कहां पे हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर देंगे। इट रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज हिडन इन लैंग्वेज। कहीं ना कहीं देखिए बात सिर्फ मिस्ट्रीज की नहीं की गई है, शब्दों के अंदर किसी भी तरह के हिस्टोरिकल या रहस्य की बात यहां पर नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स मिशन टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स। कैसी, देखिए इसके अंदर कहा गया है कि ओदर क्या कर रहा है, शब्दों के थ्रू बहुत सारी कल्चर्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहीं ना कहीं चीजों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल तरीके से समझेंगे और करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या होता है इसके अंदर गलत होता दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा, आपको सारी सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। सो बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to solve the questions of business current affairs of your Matrix Olympiad exam that is held on 5th of October 2025. So let's start this session. So the first question on your screen goes as the question number 20. First, which bank exited the Net Zero Banking Alliance in July 2025? Which bank exited the Net Zero Banking Alliance in July 2025? So the correct answer for this question would be option number B. So the option number B, HSBC Bank would be the right answer. For the question number 22, what benefit does being added to the second schedule of the RBI Act provide to a bank? So the correct answer for this question would be option number B, access to RBI facilities is the benefit that has been added to a second schedule of the RBI Act. Okay, so the correct answer would be the option number B. For the question number 23, what was India's fiscal year 26 GDP growth forecast cut to by India's ratings and research? What was India's fiscal year 26 GDP growth forecast cut to by India's ratings and research? The option number option number B would be the correct answer here. 6.3% would be the correct answer. Question number 24th goes as what is the expected GDP growth for India in 2025 according to the Asian Development Bank? Asian Development Bank के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की 2025 के अकॉर्डिंग कितनी एक्सपेक्टेड रखी गई है? So the option number B would be the correct answer here. 6.5% would be the correct answer here. Question number 25th.
goes is what does GATI launched by Fino Payments Bank aim to promote? What does GATI aim to promote launched by Fino Payments Bank? So the option number C would be the correct answer here. Zero balance digital savings account would be the correct answer here. For the question number 26th, what was the RBI Financial Inclusion Index score? What was the RBI's Financial Inclusion Index score? So the option number C would be the correct answer here. Option number C, 67. Yes. When did RBI hold a surprise rupees 50,000 crore VRR auction? So option number B would be the correct answer here. July 23, 2025. Option number B. 28. Which bank was awarded World's Best Consumer Bank for 2025? किस बैंक को World's Best Consumer Bank का अवार्ड मिला है? Which bank? HDFC Bank? No. ICICI? No. Axis Bank? No. So the correct answer here would be the State Bank of India, SBI, has been awarded for the World's Best Consumer Bank for 2025. Option number D would be the correct answer here. Question number 29. How many willful defaulters were identified by public sector banks as of March 31, 2025? How many willful defaulters were found, identified by the PSBs as of March 31, 2025? So the option number B would be the correct answer here. 1629 willful defaulters were identified by the PSBs. So the question number 30 goes is, how much did Warburg Pincus invest in IDFC First Bank via compulsory convertible preference share, CCPS? Yes. So the correct answer for this would be the option number C. Rupees 4,876 crore were invested by Warburg Pincus through convertible preference shares. So this was our last question for the current business affair. I hope you have got the solutions of all the questions of business current affairs. Thank you. Best wishes. Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to solve and discuss the solutions of reading comprehension part of your Matrix Olympiad exam that is held on 5th of October 2025. So let's start this session. It starts with a passage about Anita, who is a 28-year-old teacher. I hope आपने passage को read out किया होगा और read out करने के बाद you have realized one thing that this passage was really easy. अगर आपने passage को बहुत आसानी से पढ़ा है तो questions को attempt करना काफी आपके लिए आसान था. चलिए थोड़ा सा समझते हैं पैसेज किसके बारे में है. आफ्टर गेटिंग द ग्रिस्प ऑफ दिस पैसेज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट अनीता. अनीता इज ए 28-year-old टीचर हु रिसेंटली स्टार्टेड अर्निंग. अनीता नाम की एक लड़की है जिसने बहुत अभी कुछ समय पहले ही अर्निंग स्टार्ट की है एंड शी इज एन टीचर बाय प्रोफेशन. शी इज अ टीचर. शी कीप्स ए पोर्शन ऑफ हर सैलरी इन अ सेविंग्स अकाउंट. सो ये जो पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनीता है वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग्स अकाउंट में रखती है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर इमरजेंसी एंड डेली नीड्स. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट है जो अच्छे से याद रखना है कि वाई शी यूज टू सेव हर मनी इन अ सेविंग अकाउंट फॉर द इमरजेंसी एंड डेली नीड्स. शी हैज अ फ्रेंड नेम्ड राज. ही इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर. और राज जो है वो उसे कुछ सलाह देगा, वो उसे कुछ बताएगा. लाइक वाइल सेविंग इज इंपॉर्टेंट, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर वेल्थ, आप अगर उसको ग्रो करना चाहते हैं तो सेविंग्स जो है वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है. आज के अकॉर्डिंग जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट्स में आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ नहीं सकती है. उसकी वजह क्या है? ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट. तो सेकेंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि सेविंग्स के अंदर आपका जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही क्या रहता है? कम रहता है. ही एडवाइज्ड हर, तो उसने उसको कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा होगा एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तो सेविंग्स अकाउंट के अलावा वो कौन से ऑप्शंस हैं बाय विच अनीता जो है वो बहुत जल्दी क्या कर सकती है? अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकती है. तो उसमें कौन से ऑप्शन डिस्कस किए हैं पैसेज के अंदर? म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, एंड आफ्टर दैट फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर देयर, एफडीज आर देयर विच कैन प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स ओवर टाइम, जो समय के साथ आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. बढ़ते हैं आगे. अनीता को एक बात समझ आई दैट सेविंग इज सेटिंग असाइड मनी इन सेफ एंड लिक्विड फॉर्म्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स प्योर पुटिंग मनी इनटू एसेट्स विद द पोटेंशियल टू ग्रो. यहां पर देखिए एक डेफिनेशन दी गई है प्रॉपर, जो आपको थोड़ा सा रीड इनटू द लाइंस करनी पड़ेगी. जैसे कि क्या है इन्वेस्टिंग, जो सेविंग है उसको आप
पैसे सेविंग का क्या मतलब है और यहाँ पे इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि अपने पैसे को उन चीज़ों में लगाया जाए, उस एसेट्स के अंदर, उन एसेट्स में लगाया जाए जिसके अंदर क्या पोटेंशियल है कि आगे जाकर वो क्या कर देंगे, आपके मनी की जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे थ्रू विद सम लेवल ऑफ रिस्क। कुछ ना कुछ रिस्क वहाँ पे रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग गिव अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट इज राज एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। राज ने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस किया है। द राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कहीं ना कहीं जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जिसकी वजह से क्या होता है, परचेजिंग पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इफ अनीता ओनली सेव्स एंड डजंट इन्वेस्ट, अगर अनीता सिर्फ सेव करेगी और इन्वेस्ट नहीं करेगी, हर मनी माइट लूज वैल्यू इन द लॉन्ग रन। कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने पैसे को क्या नहीं कर पाएगी, अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएगी और बचा नहीं पाएगी। आफ्टर कंसीडरिंग हर गोल्स, कहीं ना कहीं जब अनीता को ये बात समझ आई, उसने समझा कि कितना रिस्क वो टॉलरेट कर सकती है, कितना रिस्क वो बियर कर सकती है, हाउ मच शी कैन बियर। अनीता बिगेन इन्वेस्टिंग ए स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। हर महीने उसने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। किसके अंदर, SIP के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। किसमें, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ओवर टाइम शी नोटिस हर मनी वाज ग्रोइंग फास्टर। समय के साथ उसने देखा कि उसका पैसा जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। एंड शी फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हर फाइनेंशियल फ्यूचर। और कहीं ना कहीं शी फील्स वेरी कॉन्फिडेंट। कहीं ना कहीं पैसेज को जब आपने पढ़ा होगा, यू रियलाइज वन थिंग कि पैसेज काफ़ी आसान है और बेसिक जो चीज़ें हैं वही दी गई हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पैसेज के थ्रू ही बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 31? व्हाट इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ सेविंग्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सेविंग्स की क्या चैलेंजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। इट इज इलीगल इन सम कंट्रीज, यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। इट ऑफर्स वेरी हाई रिटर्न, यही हमने डिस्कस किया कि सेविंग्स के जो रिटर्न्स है वो बहुत ही क्या है, कम है। इट कैरीज हाई रिस्क, हाई रिस्क कैरी करता है कौन, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, बट सेविंग्स के अंदर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट। इट गिव्स लो रिटर्न्स, इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। बढ़ते हैं आगे। 32, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग मनी इन अ सेविंग अकाउंट फॉर अनीता। अनीता सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्यों रखती थी। देखिए, हमने यहां पर अच्छे से पढ़ा भी था इस पॉइंट को कि सेविंग्स अकाउंट में अनीता इसीलिए पैसे रखती थी फॉर इमरजेंसीज एंड डेली नीड्स। आपको यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर इमरजेंसी एंड डेली यूज। इसीलिए जब मैं रीड आउट कर रहा था पैसेज, इसीलिए आपको कह रहा था कि इन चीजों को आप नोट डाउन करते रहेंगे तो आंसर जो है वो बहुत आसानी से आप सोल्व आउट कर लेंगे। ग्रेजुअल बाय स्टेप क्या होता है, पैसेजेस को सोल्व अच्छे से किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज इन्फ्लेशन एज एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज। इन्फ्लेशन क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन, देखिए यहां पर कहीं ना कहीं आपको अगर याद हो तो राज ने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बताई है, द राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट हियर। राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना जिसकी वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट हियर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिड अनीता स्टार्ट यूजिंग टू इन्वेस्ट रेगुलरली। देखिए यहाँ पे आता है हर महीने कुछ जो पैसा था वो अनीता ने कहाँ लगाना शुरू कर दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना शुरू कर दिया। अनीता ने कहाँ लगाना शुरू कर दिया, SIPs में लगाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। SIP इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अनीता स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर मनी एवरी मंथ। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्वेस्टिंग एज पर द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। इट गारंटीज प्रॉफिट्स विदाउट रिस्क, इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है। इट कैरीज नो रिस्क, बल्कि हमने यही पढ़ा था कि इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, रिस्क क्रिएट करता है। इट इन्वॉल्व्स रिस्क बट ऑफर्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही रहता है, बट फ्यूचर के जो रिटर्न्स है वो बहुत ही अच्छे प्रॉमिसिंग होते हैं आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। आई होप इस पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली सोल्व आउट हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैसेज के ऊपर।
देखिए नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है, इट इज अबाउट एथिकल कंज्यूमरिज्म। एथिकल कंज्यूमरिज्म, जैसे जैसे आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, इंडियंस जो हैं, हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, आज वो एक डिसीजन ले रहे हैं, एथिकल चॉइसेस लेते हैं जब भी वो शॉपिंग करते हैं। एथिकल चॉइसेस का मतलब क्या हुआ, मोरलिस्टिक वे में जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें एथिकल कंज्यूमरिज्म के बारे में, तो आपको पता लगा होगा कि पैसेज पढ़ने के बाद में कि आजकल जो हम शॉपिंग करते हैं उससे पहले हम बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, वो इको फ्रेंडली है या नहीं, कहीं ना कहीं वो सोशली पॉलिटिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है या नहीं चीज़ों के बारे में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी को एथिकल कंज्यूमरिज्म बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, एथिकल कंज्यूमरिज्म मीन्स बाइंग प्रोडक्ट्स दैट आर मेड इन वेज दैट आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। कहीं ना कहीं ऐसा प्रोडक्ट खरीदना शॉपिंग के दौरान जो हमारे एनवायरमेंट को क्या नहीं करता है, खराब नहीं करता है। एनिमल्स और पीपल, कहीं ना कहीं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, किसी के लिए भी वो क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है। इट शुड नॉट बी हार्मफुल एनीवन to animal, to people or to the environment. This includes purchasing eco-friendly goods. कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि आप क्या खरीदें, इको फ्रेंडली गुड्स खरीदें, क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स खरीदें, हैंडमेड आइटम्स खरीदें और ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं फेयर ट्रेड को क्या करे, सपोर्ट करे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म एंड सेकंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म। बढ़ते हैं आगे। रिसेंट राइज इन स्टार्टअप्स, देखिए देख रहे हैं आपकी जैसे कि बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेशन डेवलप हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं जो ऑर्गेनिक फूड ऑफर करते हैं, रिसाइकल्ड फैशन और सस्टेनेबल पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो पता लगता है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो क्या हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। आजकल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लेबल्स जो है, प्रोडक्ट के लेबल्स जो है उनको चेक करते हैं। कंपनी की प्रैक्टिसेस की बात की जाए, चाइल्ड लेबर की बात की जाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उनका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा है एथिकल हैबिट्स को प्रमोट करने के अंदर। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स का। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है, हाउ एवर एथिकल प्रोडक्ट्स ऑफन कॉस्ट मोर एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड देम। यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंज दिया गया एथिकल कंज्यूमरिज्म के अंदर कि जो एथिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एथिकल कंज्यूमरिज्म है, इट शुड नॉट बी अबाउट द परफेक्शन, इट शुड ऑलवेज बी अबाउट मेकिंग बेटर चॉइसेस व्हेन एवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल है यू शुड ऑलवेज गो फॉर द बेटर ऑप्शन। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा रोल रहा है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को प्रमोट करना, कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं स्टेप्स, कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं किसको, एथिकल कंज्यूमरिज्म को। एज अवेयरनेस ग्रोज, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, इंडियंस जब शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर रहता है, स्पेशली किसके दिमाग में, अर्बन यूथ जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यूज से कनेक्टेड रहता है और इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड बहुत ही क्या रहता है, कंसर्न रहता है, चिंतित रहता है। तो यहाँ से हमने कुछ मेजर पॉइंट्स जो है वो हमने क्या कर लिए, यहाँ से निकाल लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एथिकल कंज्यूमरिज्म, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म। उसके बाद में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया जो है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट, एथिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका चैलेंज क्या है, उनकी जो कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, हाई रहती है। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को प्रमोट किया है और उसके बाद में सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स है उनको बैन करने का भी काम किया है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, अर्बन यूथ प्ले करता है, क्योंकि अर्बन जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यूज से कनेक्टेड है और इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, बहुत अच्छा स्टेप ले सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, व्हाट डज एथिकल कंज्यूमरिज्म मीन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एथिकल कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब होता है बताइए। तो वही मैंने जो आपसे डिस्कस किया, डेफिनेशन यहाँ से आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट हियर, शॉपिंग बेस्ड ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज वुड बी कॉल्ड एथिकल कंज्यूमरिज्म हियर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following is an example of ethical consumerism? जैसे हमने डिस्कस किया था, परचेजिंग इको फ्रेंडली गुड्स, क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स, हैंडमेड आइटम्स। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, चूजिंग क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर हियर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38, What challenges mentioned in adopting ethical consumerism? क्या challenges आ रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑफन कॉस्टली, कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकी हाई रहती है। सो ऑप्शन नंबर C would be the answer. Ethical products are often more expensive. जो ethical products हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्या रहते हैं, expensive रहते हैं। Question number 39.
हाउ हैज द गवर्नमेंट सपोर्टेड एथिकल प्रैक्टिसेस? गवर्नमेंट एथिकल प्रैक्टिसेस को कैसे सपोर्ट करती है? जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को क्या करना, प्रमोट करना. सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को प्रमोट करना और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना. आई होप इट इज करेक्ट. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे इनके. क्वेश्चन नंबर 40 पर हम बढ़ते हैं. Which group is more likely to adopt ethical consumer habits as per the passage? आपको क्या लगता है इनमें से कौन जो है वो सबसे ज्यादा एथिकल कंज्यूमर हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग? हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, अर्बन यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. अर्बन यूथ कनेक्टेड टू ग्लोबल वैल्यूज. आई होप कि आपके जितने भी आंसर्स हैं वो करेक्ट हुए होंगे. आई होप कि आपको सारी के सारी सॉल्यूशंस जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आए होंगे. सो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे ओवर करेंगे. सो बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं. सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए. जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स. जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा. इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है. आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर. अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा. इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुँच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुँचा देंगे, जिसको आप इसी ID पर लॉगिन करके देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Hello everyone, how are you? I think you have done very well in Commerce Matrix Olympiad. So today I am here to provide you the solution of Commerce Matrix Olympiad, that is part 5th accountancy. Let's start here. Yes. My first question is, which accounting concept is violated if the owner's personal expenses are recorded as business expenses? So the question is, violated means when we are not going to follow any principle, that's violated. Means this is, we are talking about here about accounting concept. Which concept should be violated if the personal expenses are recorded as the business expenses? Let's go through the various options. Consistency. Consistency, it says that the same rules and regulations has to be followed from year to year. Business entity concept, it says that the business and owners are considered as the two separate entities. That's why personal expenses should not be mixed with the business expenses. So right option for this question is option B. Let's go to the other options also. Money measurement, it says that only those transactions should be recorded in the business that can be expressed in terms of the money. And going concern concept, it says that business will go for an indefinite long period of the time. So in this particular question, the option number B is the right answer for question number 41. Question number 42. Yes. Which of the following best describes the relationship between going concern and depreciation? These are the two concepts, means going concern is a principle and depreciation. So let's see the options. Depreciation is not affected by going concern assumption. Depreciation is charged only if the business is earning profit. No, it's not right. Going concern implies fixed assets will be used over time and hence depreciation is applied. Very well, right. Because the going concern says that the business will go for an indefinitely long period of the time. So that's why the fixed asset should be depreciated from time to time. So C is the right option.
In case of question number 42, C is the right option. Question number 43. Which type of account is credited when capital is introduced in the business? First of all, okay, let's pass the journal entry. Whenever the capital is introduced in the business, you know that the cash account is debited and the capital account is credited. This is the journal entry. So, they are talking about what type of account is credited, means they are talking about the capital account. Now, real account, nominal account, personal account, expenses account, we know that the capital is a personal account. So, in case of question number 43, right answer is C. Next question 44. In case of question number 44, which account type shows a debit balance? Different options are there. We have to find out that which account it shows only debit balance. Liability? No, it shows credit balance. Income, it has also credit balance. Assets, yes. Assets has only debit balance, and capital, it is also has the credit balance. So, right option for question number 44 is C, because only assets it show the debit balance in comparison to the other three options. Question number 45. Entry of dishonor of check is recorded in purchase book, cash book, journal proper, sales return. Purchase book, it records the credit purchase of things. It records the transactions which are related to credit purchase of goods. Cash book, it records the transaction which are related to cash. Journal proper, it records the transactions which are not found in any other book. Sale return book, it records the transaction which are related to return of credit sale of goods. So, the right option is journal proper. So, entry for dishonor of the check should be recorded in the journal proper. Question number 46. Rohan has returned goods worth rupees 20,000 to Radhesham as he found it defective. Rohan returned the goods to Radhesham. Which document will be prepared by Radhesham? So, in this condition, Radhesham has to prepare the document. For Radhesham, Rohan is the debtor. Whenever the goods are returned by the debtor, the document which is prepared by the Radhesham, that is credit note. Whenever the debtor returns the good, the note which is prepared is known as credit note. So, the right option for question number 46 is A. Question number 47. The bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference between. Bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference between. Go to the different options. Cash book and trial balance, no. Cash book and ledger, no. Cash book and bank passbook, yes. Bank reconciliation statement, actually it is prepared so that we can reconcile the balances between the two books, that is cash book and the passbook. So that's why we prepared the bank reconciliation statement to reconcile the balance between the cash book and the passbook. So the right option is C. D is also wrong. Petty cash book and cash book, no. So bank reconciliation statement, it is prepared. The main motive is to reconcile the balances between cash book and passbook. Question number 48. Yes. If the debit balance of the bank column of the cash book is 800 and there are checks issued but not presented rupees 3000, the balance as per passbook will be, you know that whenever we are going to make bank reconciliation statement, we will have plus items and the minus items. Here the debit balance of the cash book is 8,000. So that is the plus item. Cash book's balance is given 8,000. And the checks issued. When the check are issued, the balance of the cash book decreases, but it is not presented for payment. So it means the balance of the passbook is more as compared to the balance of cash book.
So in the bank reconciliation statement, we have to reconcile the balances between the two. So what we have to do, we have to increase the balance of the cash book. Increase means we have to add it to the balance of cash book, that is 3,000. So the answer will be 11,000. This is the right answer. So B is the right option in case of question number 48. If the bank has charged interest, but it is not yet recorded in the cash book, then in bank reconciliation statement, as you know, in bank reconciliation statement, we have to reconcile the balances of the passbook with the balances of the cash book, or the balances of cash book with the balances of passbook. So when the bank has charged interest, it means the balance of passbook decreases when the bank charged interest, but the balance of cash book is more as compared to the balance of the passbook. So to reconcile, what we will have to do, we'll have to reduce or deduct the balance of the cash book so that it can become equal to the passbook. So added to the cash book, no. Deducted from the passbook, no. Added to the passbook, no. Deducted from the cash book, yes. So the balance of the cash book should be deducted so that it reconcile with the passbook balance. So in case of question number 49, the right option is D. So let's start with the question number 50. A check of rupees 5,000 received from the customer was wrongly posted to the debit of the customer in the ledger. This error is called when a check is received from the customer. So in that condition, the customer account should be credited. Customer's account should be credited. But we have debited customer's account. Apart from credited, we have debited it. So this is the error. This is a what type of error? It is the error of omission, means when we omitted to write something, when we forget to pass any entry, that is the error of omission. Error of principle, when the rules are not followed, it is the error of principle. Error of commission, yes, it's the error of commission. When apart from doing debited, we have done it credited, or apart from doing credited, we have done it debited. So here the right option is option C. Question number 51. This is the match column 1 with column 2. Two columns are given, column 1 and column 2. We have to match the correct option in 1 with in the column 2. Let's go through it. Revenue recognition principle, matching principle, conservatism, full disclosure principle. In case of column 2, match expenses with revenue. Revenue is recorded when earned. All material facts should be disclosed. Anticipate losses, not profit. So revenue recognition concept, it says that revenue is recognized when earned. So in case of P, we can say correct match is 2. Matching principle, it says that we have to match expenses with revenue. In case of Q, the right option is 1. Conservatism principle, it says that anticipate losses, not profit. R with 4. Full disclosure, it says that all material facts must be disclosed. That is 3. So right option is 2, 1, 4, 3. Yes, D. D is the right option in case of question number 51. Let's proceed to the next question. Question number 52. This is also similar to that. That is, we have to match column 1 with the column 2. Let's go through the different options in column 1. Journal, ledger, narration, posting. Column 2, explanation of transactions, classified books of accounts, transferring from journal to ledger, books of original entry. Let's start it. Different options, P, Q, R, S. In case of P, journal. Yeah, it's a book of original entry. Journal is known as the book of original entry. Ledger is the classified books of accounts, that is 2. Narration, this is none other than explanation of transaction, that is 1.
Posting, what is that? When we transfer from the journal to ledger, it is known as posting. That is 3. So right option is 4213. Yes, 4213. So B is the right option in case of question number 52. Now, let's move ahead to the next question. That is question number 53. Yes. This is again that one match, the column 1 with the column 2. Let's go through the different options in column 1 and column 2. Column 1, journal proper, sales return book, petty cash book, debit note. Different options in front of that. For transactions not recorded elsewhere, records goods returned by customer, record minor and routine payments issued to supplier when goods are returned. So in case of journal proper, we will say that we will it's used for the transactions not recorded elsewhere. So in case of the P, right option is 1. Sales return book. These record goods which are returned by the customers. That is 2. Petty cash book. It records minor and routine payments. That is 3. Debit note. It is issued by the supplier when goods are returned. 4. So the right option is 1, 2, 3, 4. Wow. That is in case of question number 53, the right option is A. Let's proceed to the next question, 54. Yes, 54 actually it is a statement based questions in which two statements are given, statement 1 and statement 2, and you have to find out whether both the statements are correct or any one of them is false. Let's go through the statements. Statement 1. Journey is called the book of original entry. Yes, right. Very well. Journal is the book of original entry. Ledger provides chronological record of transaction. No, it's false. Ledger doesn't provide chronological records of transaction, but journal provides. So we can say first statement is true, second is false. So right option is C. Statement 1 is true and statement 1 is true and statement 2 is false. So 54 in case of question number 54, C is the right option. Question number 55. Yes. Again the statement based questions in which two statements are given. Statement 1. According to matching concept, all expenses related to the current accounting period must be matched with the revenue of the same period. Very well right. The matching concept says that the expenses of a particular period should be matched with the revenue of that particular period. It's true. This ensures that the profits are neither overstated nor understated. Very well right. The matching concept says that the revenue of a particular period should be matched with the expenses of that particular period so that we came to know about the true profit. Both the statements are true, yes. So in case of question number 55, right option is A. Yes, move ahead. Question number 56. Yes, move ahead. Question number 56. Again, statement based question. Two statements are given. Let's go through statement 1. The journal proper record all transactions that cannot be recorded in any special journal. Very well right. In journal proper, we record those transactions which didn't find place in purchase book, sales book, purchase return, journal proper as well as cash book. So it's true. Transactions like depreciation or opening entry are recorded in journal. Very well right. Because these transactions didn't find place in any other special subsidiary books. Both the statements are true. So in case of 46, A is the right answer. Move ahead to question number 57. These are the statement based questions. Statement 1. Interest credited by bank, not entered in the cash book, results in the higher balance in the passbook. Let's see.
As you know that in case of the bank reconciliation statement, two books are prepared, cash book, passbook, and we have to reconcile the difference between both of them. This is the work of bank reconciliation statement. Whenever the interest is credited by the bank, it means passbook shows the graded balance because interest is credited, but it's not written in the cash. So it's very well right. It results in the higher balance in the passbook. Very well right. So we can say it's true. It should be subtracted while preparing bank's reconciliation statement from the passbook balance. That they are right. When we are going to make bank reconciliation statement from the passbook balance, then we have to subtract it from the passbook balance. Very well right. Both the statements are true. So we can say first is the right option, A. In case of question number 57, A is the right option. Both statements are correct. Let's move to the next question. Question number 58. Arrange the following activities in proper sequence. This is the sequence-based question in which different transactions are given or statements are given, and we have to find out the correct sequence of these particular statements. Arrange the following activities in proper sequence for recording and classifying a business transaction. Posting to the respective ledger account. Next is journalize the transaction, preparing the trial balance, classifying the accounts under appropriate head. Yes, this is the right. First, we have to classify the accounts under the appropriate head. That is whether the particular account will come under the real account, nominal account, personal account. After classifying, that is, first is we have to classify it. After classifying, we have to journalize the transaction, means we have to pass the journal entry after classifying. After that, we have to post it into the ledger account. After journal, we have to make the ledger. After ledger, the next is we have to make the trial balance, that is 3. Right sequence is 4, 2, 1, 3. Yes, this is C. So right answer for question number 58 is C. Move ahead to the next question, question number 59. In this question, only one statement is given and you have to identify whether this statement is a true, false. Sometimes true can't be said. Statement, bank reconciliation statement is prepared only when there is an overdraft in the bank account. No, it's not right. It's not right. Only in case of bank overdraft, it's not prepared. So we can say it is false. So the right option for question number 59 is B. Next question, 60th. Yes. 60th question. Materiality and relevance are the same qualitative characteristics of accounting information. No. No, they are not same. Materiality says that important information should be recorded. Whereas relevance says that the relevant information, the information that is available in time should be recorded. So these are not the same. So we can say B is the option. Therefore, this is false. This statement is false. So in case of 60, the option is B. Thank you, everyone.